आज एक ऐसे एमिनेंट पर्सनैलिटी मेरे साथ हैं जो कॉस्मो साइंटिस्ट हैं। आप सोच रहे होंगे भैया साइंटिस्ट तो हैं लेकिन कॉस्मो मतलब हाँ, दुनिया के बाहर जो है, द कॉस्मिक वर्ल्ड। बलदेव कृष्णन शर्मा जी, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए सर। एक्चुअली मैं दिल्ली का ही हूँ लेकिन मुंबई में 23-24 साल रह के बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। थैंक यू सो मच सर हमें रेडियो सिटी पर ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू जी, मोस्ट वेलकम, प्रणाम एंड शुक्रिया। ये जो अंतरिक्ष के बारे में ऑलवेज लोगों ने बचपन से सोचा है, क्योंकि आई गेस हम लोग को लगता है कि पता नहीं यहाँ पे कोई और हमें देख रहा होगा, कोई और दुनिया में है। दिस इज ऑलवेज बीन अ फैसिनेशन। तो आपकी सर अंतरिक्ष के साथ फैसिनेशन कब स्टार्ट हुई थी? स्पेस एक मेरा हमेशा एक रुचि का सब्जेक्ट रहा है जी। और मैं हमेशा सोचता था कि इतने ऊपर इतना बड़ा जो दुनिया है जो हमारे ऊपर है, जब हम रात को देखते हैं तो ये क्या चमत्कार हो रहा है वहाँ पर कि कोई नीचे नहीं गिर रहा, सब अपनी अपनी जगह पे हैं, सितारे जो हैं। तो इनमें क्या साइंस होगी जो इनको अपनी जगह पे रखा हुआ है। तो ये एक हमेशा एक शुरू से मेरे मन में एक प्रश्न रहा है और मैंने इसके ऊपर काफ़ी, क्योंकि मैं खुद भी एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ जी। तो इसके ऊपर एक काफ़ी मेरे स्टडी हो गई फिर उसके ऊपर। एंड स्पेशली जब मैंने इसके डिटेल में जाना चालू किया तो 1920s में मतलब करीबन मोर देन 100 ईयर्स जी। लोगों का जो साइंटिस्ट थे वो इसके ऊपर काफ़ी वर्क कर रहे थे, क्योंकि उस समय जो अलग अलग मॉडल ऑफ यूनिवर्स थे उसके अंदर काफ़ी बदलाव आया था, क्योंकि आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी डाली थी E is equal to mc square. या दैट वाज E equal to mc square was the most popular one। जी जी। लेकिन आप देखेंगे कि उन्होंने जनरल रिलेटिविटी के ऊपर जो वर्क किया था और उसके बाद जॉर्ज लेवेंटर ने ही वाज वर्किंग ऑन बिग बैंग थ्योरी। हालांकि उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया था पर ही वाज वर्किंग। और हबल ने जब एक एक्सीडेंटली उसने वहाँ पर देखा डीप स्पेस में तो उसको एक बड़ी आश्चर्य सी चीज़ें दिखाई दी। उन्होंने ये देखा कि जो गैलेक्सीज हैं वो स्थिर नहीं है, वो भी मूव कर रही हैं और वो जितनी दूर हैं उतनी गति से मूव कर रही हैं। मतलब अगर समझो एक 1 MPC डिस्टेंस पर है तो वो एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है और अगर वो उसके डबल डिस्टेंस पे है तो वो डबल स्पीड पे चल रही है और अगर ट्रिपल स्पीड पे डिस्टेंस पे है तो ट्रिपल स्पीड पे चल रही है। तो उसने ये जब ऑब्जर्वेशन किया जी और फिर उसने वो उसका प्लॉटिंग किया पूरा इस ग्राफ के ऊपर, तो उसको पता चला कि डिस्टेंस और वेलोसिटी इसका एक रिलेशनशिप है एंड दैट ब्रॉट अ ह्यूज डिफरेंस इन द होल थिंकिंग ऑफ द कॉस्मोलॉजी। आई रिमेंबर मेरे बचपन में भी जब लाइट ईयर्स की बात की जाती थी, आई रिमेंबर वी रियलाइज दैट एक्चुअली स्पीकिंग पहली बार मुझे समझ में आया था कि लाइट ईयर्स कितने हमसे दूर हैं। तो एक्चुअली जो हम देख रहे हैं वो अरबों साल पहले खत्म हो चुकी है जब तक हमारे पास लाइट पहुंच रही है। ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रही थी। तो हम एक्चुअली इतिहास को देख रहे हैं जब हम ऊपर देखते हैं, हम देख रहे हैं वो बिल्कुल इतिहास होता है जी। डीप स्पेस इज ए अर्ली यूनिवर्स जी, जो स्टार्टिंग का जो शुरुआत का यूनिवर्स है जी। हम उसको देख रहे होते हैं और यहीं से मेरा पूरा स्टडी चालू हुआ जी। क्योंकि उन्होंने जो निकाला था, जो उन्होंने एक सिंपल इक्वेशन निकाला था, V is directly proportional to D जी। मतलब डिस्टेंस और V is velocity and D being distance, correct। डिस्टेंस और उसको इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट आता है तो उसको हम कहते हैं कि हबल कांस्टेंट। अभी इसके अंदर कहीं पर भी टाइम फैक्टर नहीं है। ओके, तो क्योंकि टाइम फैक्टर नहीं है तो इट इज़ अ वेरी स्टैटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है कि आप जितना वेलोसिटी करते जाओ, आप जितना डिस्टेंस जाते जाओ उतनी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वगैरह वगैरह। और मेरा ये कहना था कि आपका ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप जब तक उसको समय नहीं देते हो। अभी देखिए आप है, मैं हूँ, हम जिंदा हैं तो हमारी एज इज नॉट स्टैटिक, आवर एज इज डायनामिक। ओके, लेकिन अगर आप उसको स्टैटिक बनाएंगे तो वो डेड बंदों की होती है। मतलब मेरा जो ग्रेट ग्रैंडफादर खत्म हो चुकी है वो 85 है तो वो 100 साल बाद भी 85 ही रहने वाला है। राइट, ही इज नॉट गोइंग टू चेंज। और इसके अंदर जो उन्होंने कैलकुलेट किया था 13.86 बिलियन ईयर्स इज
द एज ऑफ द यूनिवर्स, जी, उसको अगर आप 5 बिलियन साल पहले कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको उतना ही मिलेगा, Right. और 3 बिलियन साल बाद में कैलकुलेट करेंगे तो भी उतना ही मिलेगा, Correct. बिकॉज इट्स अ स्टैटिक राइट, विच इज टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी। क्योंकि अगर लिविंग अर्थ है, लिविंग यूनिवर्स है, हाँ। तो लिविंग यूनिवर्स विल हैव अ डायनेमिक थिंग। so I want to understand how could the great minds overlook such a simple, you are explaining in like a very simple terms to a layman like me, मेरे को भी ये बात समझ में आ गई है, तो ये कैसे ऐसे ओवरलुक हो गया? क्योंकि उनको कोई ऑल्टरनेटिव मिला नहीं है, और To prove that theory. या तो उसके अंदर उनका थ्योरी Right. उसको डिसबैंड करने के लिए, क्योंकि इट वाज सो सिंपल फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार ये गैलेक्सी है, इतने डिस्टेंस पे है, और वो स्थिर नहीं है, वो मूव कर रही है, तो क्या वेलोसिटी पे कर रही है। तो जैसे उन्होंने वो ग्राफ बनाया तो उनको ये लगा कि भाई नो नो, दिस इज द ओनली फार्मूला विच इज पॉसिबल, नो अदर फार्मूला इज पॉसिबल। लेकिन ऐसा है कि नासा ने जब इसका और डीप स्टडी किया जी, तो उनको ये महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक्सपांड नहीं हो रही है, ये एक्सेलरेट हो रही है। जो स्पीड जो है वो एक्सेलरेट हो the रही velocity keeps increasing as you go faster. इज इंक्रीजिंग, इज एक्सेलरेटिंग। Okay, मतलब वो अगर आप फॉर्मूला बेस करेंगे तो v/t हो जाता है। okay. तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, सो उसका मतलब क्या है, मतलब व्हाट इज द रीजन फॉर दैट टू इंक्रीज। तो v इज इक्वल टू h0 इंटू टी इज वन अंडरस्टैंडेबल, मगर ये एक्सेलरेट का इसमें है नहीं, क्योंकि ये तो एक स्टेटेड सिंपल Close ended solution है. मोनोलॉग हाँ। फॉर्मूला है। Correct. ओके, तो हमने जो वर्कआउट किया, मैंने कहा ना इसके Your NU constant. NU कांस्टेंट हमने अभी बनाया जी। है, क्योंकि H0 वर्केबल नहीं है, Right. तो इसलिए हमने नो कांस्टेंट बनाया। और नो कांस्टेंट का कारण क्या था कि उसके अंदर जो d डिस्टेंस है उसको हमने e⁻r इंटू टी हमने मल्टीप्लाई किया है। E इज अ यूलर्स फैक्टर, R इज द रेट ऑफ एक्सपांशन, एंड T इज अ टाइम पीरियड। तो उसके अंदर ये सब चीज़ें जब सब साथ में आती हैं तो उसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलेगा, आपको कर्व मिलेगा, एंड कर्व शोज द एक्सेलरेशन। Wow. तो इन्होंने क्या किया, उसको समझ नहीं आ रहे उनको, जितने साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था डार्क एनर्जी। कि उन्होंने कहा कि एक्सेलरेट हो रहा है, ऐसे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो शायद कोई डार्क एनर्जी है। Gravity. एनर्जी, just डार्क energy. एनर्जी, Okay. ग्रेविटी ये पुल करती है, Okay. अट्रैक्शन, Right. ये एनर्जी है जो उसको एक्सपांड कर रही है, अच्छा। मतलब जो धक्के मार रही है, जो आगे बढ़ा रही है। तो दे आर ब्रॉट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क एनर्जी। लेकिन जो मैंने फॉर्मूला अभी दिया है जी। उसके अंदर आपको डार्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है दैट इटसेल्फ गिव्स यू एन एक्सेलरेशन। सो ये एक बहुत बड़ा आविष्कार है। Unbelievable. And you know, I would say that, you know, we have so many, we go back in time also. सारे बड़े जो साइंटिस्ट हैं, जो स्कॉलर्स हैं, चाहे आर्यभट्टा से के साथ शुरुआत करें, इंडिया has always been the home ground of that. What is the reason for that? Do we question a lot more? Is that the reason why? और हम जो सिद्धांत हमें दिया जाता है, we don't accept it. We say, but why? Is that why we? अभी ऐसा है कि जिन लोगों ने एस्ट्रोनॉमी में एमएससी की है, जी। पीएचडी की है, जी। ओके, वो आपके थॉट को इतना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि To prove it they are wrong. right Yes. and what we are saying is wrong. Right. It is only, see अभी मैंने इसके अंदर इसरो को जी। एक वो दिया है कि यू चेक द एक्सपांशन विच आदित्य 1 इज फॉलोइंग। ओके, आदित्य 1 इज आल्सो रिसेसिंग अवे फ्रॉम द अर्थ एट द रेट ऑफ 1500 मिलीमीटर्स पर ईयर। ये मैंने उनको दिया है। अब जिस दिन ये वेरीफाई हो गया, मेरा थ्योरी वेरीफाई हो जाएगा। Wow. That's incredible. So now to understand for a normal person, मैंने जैसे स्टीफन हॉकिंग की जब पिक्चर देखी थी, बहुत सालों के बाद जब उनका थ्योरी को यस किया गया था, एंड ही वाज गिवन दैट, वो जैसे उनको जो पेन दिया गया और पब्लिश होना होता है, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट, तो ये अगर हो गया, सो व्हाट डज दैट मेक यू देन? आपका नाम मतलब इन द ग्रेट्स ऑफ टाइम में लिखा जाएगा सर? मैं
साइंस के बारे में सोच रहा हूँ, अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ। करेक्ट। मैं सोच रहा हूँ कि साइंस कैसे रियलिटी को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि सो लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज। हाँ, लॉट ऑफ थिंग्स विल। ये हबल ने जो फाइंड आउट किया था, उसने कहा था कि डीप स्पेस में हो रहा है, और हम कह रहे हैं कि जो डीप स्पेस में हो रहा है वो यहाँ भी हो रहा है, क्योंकि जो परफेक्ट कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल है जी, वो यूनिवर्स को यूनिवर्स बना के रखा है, विच इज़ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। मतलब आप कहीं से भी देखिए आपको सेम दिखेगा, और होमोजीनियस है मतलब वो कहीं पर भी चले जाइए उसकी जो सिचुएशन है वो सेम है, सिमिलर है। तो मैंने ये कहा कि अगर समझो डीप स्पेस में एक्सपांशन हो रही है तो हमारे अगल बगल में क्यों नहीं हो रही, उसका स्केल अकॉर्डिंगली होगा। ओके, स्केल विल बी डिफरेंट। वहाँ आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं बिकॉज द डिस्टेंसेस आर लॉन्ग, राइट। यहाँ पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे बिकॉज द डिस्टेंसेस आर क्लोज, तो आपको शायद वो माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं दे रहा। ओके, तो यहाँ पर हमने जो अपना नो वैल्यू जो निकाला है वो किससे निकाला है? हमने निकाला है अर्थ और मून से, बिकॉज अर्थ एंड मून इज पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जी। अगर यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है तो अर्थ मून का डिस्टेंस भी एक्सपांड हो रहा है। वाओ। ओके, अच्छा, अभी So actually, I want to stop here. This is what the book that he has co-titled, presenting a new model of the universe, a living organic universe. इसका मतलब ये है जो भी हमने किताबों में पढ़ा है शायद वो सब चेंज हो जाएगा आगे चल के। उसको समय लगेगा लेकिन होगा। जैसे प्लूटो एक टाइम पर प्लैनेट माना जाता था, अब नहीं माना जाता है। नहीं माना जाता। तो मेरे बचपन में तो मैं फॉरएवर प्लूटो बोलता हूँ, आज भी मैं बोलने का मन करता है। मेरा बेटा बोलता है नो इट्स नॉट अ प्लैनेट। बट ऐसे तो सर कांस्टेंट इनोवेशन इन साइंस होते रहेगा विद ग्रेट माइंड्स लाइक यू आल्सो। इसका मतलब हाउ डू यू क्वांटिफाई इट देन? मैं ये कहता हूँ कि साइंस एक ऐसी चीज है कि जो किसी की मोनोपोली नहीं है। ओके, वो अगर आप कोई चीज प्रूव कर सकते हैं जी, और वो उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं तो देन इट इज ओपन टू द वर्ल्ड। आई मीन पीपल हैव टू एक्सेप्ट इट। राइट। ओके, एंड देन द फॉर एग्जांपल जो न्यूटन ने किया था इट बिकेम क्लासिकल राइट। व्हेन आइंस्टाइन केम, यू सी। सो व्हेन न्यू थियरीज कम इन and they are able to give it with the proof and people are able to verify the things, they supersede the old. So similarly this, see, it is an evolution. Correct. Okay, it is not your monopoly, and science is never a monopoly of anybody. It's a monopoly of knowledge. So जैसे knowledge expand होगी, okay, नई नई चीजें आएंगी। अभी ये हबल्स लॉ जो है ये 96 years old है, ये 1929 में हुआ था। राइट। अभी 2025 है जी। तो 96 years तक इसको किसने डिस्टर्ब नहीं किया। और अब जो अगर हो गया तो क्या लॉ विल सीज टू एग्जिस्ट? नो, द लॉ विल गेट मोर रिफाइंड। ओके, क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ, V is equal to, यू आर एडिंग ऑन टू दिस। आई एम एडिंग ऑन टू, आई एम रिफाइनिंग दैट इक्वेशन। Wow. जो लीनियर इक्वेशन था Right. उसको नॉन लीनियर इक्वेशन बना रहा हूँ। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू ऑफ द वेस्ट एंड ऑल द, we आई ऑलवेज हैव दिस क्वेश्चन। अच्छा, मैंने वो नंबी सर की जो मैंने फिल्म भी देखी थी, मे बी लॉट ऑफ फिक्शनलाइज्ड आल्सो, बट आई ऑलवेज फील दैट समहाउ देयर इज ऑलवेज दिस ग्रेट ऑपोजिशन टुवर्ड्स, इवन दो साइंटिस्ट्स आर ऑल इन वन लेवल, बट देयर इज सम ग्रेट ऑपोजिशन टुवर्ड्स a new theory coming from the east. ऐसा होता है. Is it still there or is it just a myth with people like us? It takes little time. It takes little time. If you are having some alphabetic qualifications of Harvard and this thing and Correct. you know Cambridge and Yes. Oxford and all that, possibly Faster. it becomes acceptability becomes a little easier. Now see, the manuscripts I've sent to 4 different world astronomical magazines. जी, जी. They have accepted the manuscript. Okay. They are working on a peer review and editorial review. जी. वो process चालू है. जी. तो by I think end of June या say mid of July, Wow. I should be able to get the response. See, here also जो भी मैंने mathematics किया था, जी. मैंने डॉक्टर अजीत कुमार है, he is the head of the Institute of Chemical Technology. जी. मैथमेटिक्स के हेड हैं जी. एंड ही इज डॉक्टर अजीत कुमार। Okay. जी. तो उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलके
जी। मेरा पूरे का पूरा उनको ये मैंने कहा था कि भाई आप मेरी ये वेरीफाई करिए, क्योंकि मैंने मैथमेटिकली सब कुछ अपने हिसाब से बराबर किया है. नाउ यू सी इट फ्रॉम योर एंगल वेदर दिस इज ओके और नॉट. Right. So after 1 week of study, he picked up the phone and called me and told me, congratulations, everything is fine. Fantastic. Okay. Secondly, So that's the authenticity of the verifying. of the हो गया. verifying. Okay, ये हो गया. दूसरा, मैंने उनसे कहा कि भाई आपने अगर ये पूरा मेरा बुक इतनी अच्छी तरह गो थ्रू किया है, can you put a foreword to me? So he said, okay, I'm so convinced, I'm so happy about it, I'll be happy to write a foreword for it. Wow. तो मेरी ये जो बुक है उसके अंदर foreword डॉक्टर अजीत कुमार का है. Fantastic. When you started doing this also, you know, theory जब alternate होती है किसी existing, जैसे आपने 96 years, were there moments of doubt जब आपको लगा था कि मुझे डाउट नहीं है, अच्छा. लेकिन जो एकेडमिशियंस हैं, जी जैसे मैंने कहा कि वो एडी जोटी का रोल लगाएंगे टू शो डेट हाउ इट इज नॉट राइट. will you be allowed to counter? Certainly, we should be able to. There would be seminars. I would like to participate in panel discussion. जी. मेरे को कोई ये तो बताए कि मेरे में fault क्या है. Right. See, let somebody come out and tell us that look, what you have written is not right. Right. Okay, either they correct themselves or we correct ourselves. Wow. Okay, so because ऐसे जब आप एक थ्योरी बनाते हो सर, see, knowledge is not a monopoly of anybody. absolutely, absolutely. Okay, knowledge is only something which needs to be proved, and it needs to be proved. Otherwise, it becomes a fairy tale. Absolutely. Oh, and that is where I remember in my college, we used to have moot courts. We used to go to IIT and we used to do, you know, we used to have lots of debates where there was lots of interjection. And you had to give a very, very interesting answer, which both parties had to be convinced with. तो यहाँ पे आपने डेविल्स एडवोकेट अपने लिए खुद बहुत किया होगा कि ये गलत है, ये है. Was there a large team that was involved? Do tell us about that. Yeah. We have been part of my own staff. We have been debating on it. जी. And first thing I have told my people is not to accept what I am telling them. They can verify. They can, go through Google, go through whatever other information is available Right. across the board, and challenge it. Okay, because see today, if I try to say that look, this is what it is, then it is like that Baba saying yahi hota hai, it makes no sense. Correct. Okay, because it is going to be verified, and when it's going to be verified, people are going to use acoustic words if it is not the right thing. They say they wasted their time and all Right, that. right. I said no, we have to be. That's why I went to Dr. Ajit Kumar. Right. Okay, and I told him that, sir, you please have a look at it. Okay, this is an assignment for you. Right. Have a totally verify it, and if you find anything wrong anywhere, okay, you have a right to say that it is wrong and correct it. After he gave the forward, what's been the reaction of the other cosmetologists and astrophysicists in India? I had met one of the cosmologists. I wouldn't say cosmologist, but astrophysicist. जी. And he was telling me something which was already there on the web. So there's nothing new. I told him one thing, that sir, if you keep your doors and windows open, then there is a reason for us to discuss. But if you only tell me what is already there on the Google, I am already aware of it. It's not that I am not aware of it. It's not that I have sat in a dark room and written the thesis. Yes. Okay, I am already aware of all this. Right. And I have also given comparison between this and this. So if you are open to it, then we can discuss. If you are just going to tell me what is it there in the book, then we close the discussion. We can So you faced opposition in India also from this? in one of them. Because see, what had happened is, I had gone to, for me, Dr. Jayant Narlikar has been an inspiration. Right. Okay, so I wanted to basically show him because he had worked on a theory called steady state theory. Right. In fact, an improved version of steady state theory, because steady state theory, they wanted to say that there is a mass which is created in the universe, and they could not show, that team could not show where the mass is created. Therefore, they faced those challenges and it could not be accepted. Then he joined Fred Hoyle, okay, the scientist, and they worked on this steady state, quasi steady state theory, Right. which says that like
what you have on the BSE index. Right. There are ups and there are downs, Yes. and there are ups and downs, but overall, over a period of time, There's an upswing. there's an Yeah. upswing. Correct, So correct. he says there's an expansion, but intermediate there's an Yes. increase, then there's a decrease. Right. So expansion, crunch, and then it goes on. Right. So this again was not accepted. And the So loopholes were found in their research. And I wanted to basically meet him and show him that, look, sir, this is the book, this is what I've done, this is the mathematics used, and I'm able to prove where the mass is created. Wow. So it is able to authenticate your steady state theory. But of late, unfortunately for him, he had Alzheimer's, he had a lot of medical issues, okay, and in the last stages where I had met Dr. K, what is his name, Dr. Ajit Khembavi, okay, which is also a director of IUCA. IUCA is inter-college center of astrophysics and astronomy. Okay. That's Right. it is in Pune, Okay. and he is the founder director, Okay. Dr. Jen Nalikar. So I wanted to basically show him, sir, this is. I think he expired on 20th of May. Okay. Oh, recently. He would have gone a much more happier person had he given me the audience. But then he was. That is suffering also what medical- happens. Scientists like yourselves, you all spend how long did this research entirely take, sir? It's almost 25 years. My God. It's a long period. It's a long period. How does one keep themselves motivated in this long period when you are not getting answers for so many years? Yeah, I mean, it's a self motivation which keeps on coming that you are not wrong. My Okay, that self confidence builds everything. God. Okay, today also I'm launching. Tomorrow I'm going to have a press conference. I'm launching the book. Big people are going to come over there. Right. They're going to talk about. So unless you're confident about your product, Yeah, of course. you can't go to the world. You can't. You can't be fooling around. Have you thought of the moment when the acceptance will come and in the journals it will be published? Have you thought of that day? Yeah, in today's digital world, it should not take a long time. Right. Should not take a long time. So how are you going to celebrate after 25 years? Have you thought about that? First of all, I have to live for that, but No, 25 years has already happened. You spent so much time doing this. Yeah. Now that the summit is right there, have you thought of your celebration, or are you going to finally say no more theses now? no. My next book is again coming. Wow. And my book again, there is a book which I'm going to make is on space mechanics. How the space is basically, what is the mechanics behind the whole space working. So that is something which is something very, very out of the world. It's fascinating to know this, but Yeah. as any normal human being, I'm always fascinated. Does a black hole really exist? Yeah. And is there another dimension? Are there other dimensions? In your extensive study, let me ask you a layman's question. Are we alone? Or is it mathematically not possible for Earth to be alone? See, we have to understand that there are animate things and inanimate things. Right. Inanimate thing is something which doesn't have life, Yes, and animate things have got life. right. Now, animate things can be programmed to do an activity. Inanimate things are like material and all Right, that. right. They are physically there. You can carve them, you can shape them, you can do that. So there is a combination of both. What we call it as a hardware and a software. Right. Where the programmed bodies or your living bodies. Right. See, living body is nothing but a technology, which is a very compressed technology. Now, for example, we in 1950s we had electronics, Yes, yes. with valves and bulbs and all that. Yeah. Then we came to micros, Right. okay, so, or transistors and all that. Now we are moving towards nano, Yeah. okay, which is even makes the products even more micro, more smaller. Right. Then we will go to pico. Then we will. Now the universe, the technology on which you and I are built is a biotechnology which is 10 raised to minus 18. Nanotechnology is 10 raised to minus 9. So it is a
nano technology on which we are created. Wow. So that has compressed. See, there is so much of talent, so much of knowledge, which is compressed into a human being. If you see Ravana, matlab people 100 years back, 200 years back, they were much larger in size with us. Yes. See, just like our technology is improving, even the technology which has been created for us is also improving. We are also micronized. Wow. We are also becoming smaller and smaller. Right. Okay, and getting smarter and smarter. Okay, and our physical abilities are being transformed into mechanics. Okay, so we are using machines for everything. We are using machines. So that is also created by us. So human is becoming shorter, smaller. Okay, why? Because nature is also looking for economics. Okay, earlier the amount of food which people used to eat was much more available. Is much more not only available, it used to be consumed like anything. Correct, yes. People, I remember in Punjab, they used to take one lassi ka glass. Okay, and in fact, in my gaon, I used to see wo baldi se aise peete the. Chach, like Correct. that. So, those were the people, and not very long, it's just about 70, 80 years back. Right. Okay. So, what is happening to the entire thing is a programmed system. So, when you say, are we alone? I'm coming back to that. We are not alone. But the shapes may be different according to the environment of that particular situation. Because nobody can work just with inanimate things. Okay, they are just physical. They are like hardware. Right. Now, hardware has got its own importance. Right. Now, for example, the outer body of the earth is a hardware. Right. It has got its own importance. Right. It is a protective system for soft material or for soft items inside. Right. Inside the system. So everything has got its own importance. So hardware and software. So when we are talking about software comes from the animate things. And that is the living bodies. And living bodies of whatever size, shape, this thing. Human can be, yes. Human is also a particular form, which I personally believe is a multi-dimensional human. Right. He can do anything. Correct. Now see, what a tiger can do, he can हिरण को पकड़ता है, आदमी भी कर सकता है. Correct. ठीक है ना? So whatever anybody can do, human can do it much better. Much more. Yes. Now see, if a cat has to catch rats in a day, it can catch 1, 2 and 3 because it has to eat. To finish up the rat, cat has to eat it. Human can kill 1,000 rats in no time. It can pick up 1,000 rats and gas it and all. If you have to kill 1,000,000 chickens overnight, it is a human who can do it. So it is a multi-dimensional human who can do anything what you ask for. Okay, which is not possible by these animals and other things. So human is a special grade living body which nature has created. Will you ever be like how I'm amazed by all the information that you're giving me, having spent so much time studying space? Supposing for us an alien concept and an alien or whatever those kind of things, or something that you were saying that how is this possible? This is away from the equation. Does it amaze you, or is it just a equation and just a problem to be solved or something like that? It's a very normal thing for you now. Does it still amaze you when you see everything in space? Because every time I see space, I'm just so fascinated by the sheer numbers and the size and all that. Does it fascinate you like that still? Yeah, it does fascinate me. In fact, it adds more interest in what I'm doing. And I'm sure that what I have communicated in my book, if people start looking into it, because I have given all proofs. See, I believe in science, and science works on proofs. Right. So I have given all my proofs, I have given all my calculations. Now, for example, Earth is expanding. Right. See, there is a tectonic theory which says that... The plates. Which says that as far as, the Earth is concerned, the size is same. It is the plates which keep on shifting here and there. Okay, and accordingly, the continents which are placed on the plates are also shifting. This is the theory. I say it is not so. Just like anything is expanding, Earth is also expanding, and I've given at what rate it is expanding, how much it is expanding. It is 0.64 millimeters per year it is expanding. Okay. Now, if it is expanding at that, what is the proof of expansion? Okay. So, in my book, I have given
how you go to Uttarakhand, see, you get cracks. Right. Now, when you get cracks, now if you get a crack which is moving like this, that means it is contracting. But if you get a gap, means it is expanding. Right. Okay. So everywhere you are getting gaps. Okay. Now see, if the earth is expanding and the overall it has to remain as a sphere. The shape of the earth has to remain as a sphere, and that for all celestial bodies it has to remain. So it has to expand everywhere equally. So if it has expanded, say in Joshimath, okay, it has expanded there, and then it will not go there again. So that what has happened has happened. It has expanded. Now next it may come after 10 years, it may 15 years. It has already expanded. So similarly it will expand in other places. Now all these वो जो कहते हैं हम लोग slides which are happening, and landslides which are happening. Now landslides happen what? When something is expanding, it is moving like this. Yeah. And anything which falls out of the gravity starts falling down. Okay. So this is expansion. And even NASA has said that the Himalayas are rising. Yes. Okay. So when they are rising, from where are they rising? It is the expansion of the earth. So far, they have said that because the plates are colliding, it's going up like this. See, this is their theory. I tell you, a lot of these branded scientists are doing a lot of fiction work. Okay. Right. Because they want to prove a point. Right, right. Okay. Now, see, for example, if you go to a doctor, he'll give you some medicine. Yes. Whether he knows it will cure or not, but he'll give you some medicine. One medicine fits all sizes. For Yes, all yes. So they're trying to explain how those things are happening. I'm saying that expansion is a natural process. Ji. Okay. And any body which is there as part of the natural system will expand. Now, for example, I'll tell you, now human is a natural system. Okay. Now, if I'm rising, say, from a small baby to adolescent, so everything is rising. Yeah. My eyes is increasing, and the slot in which the eye is placed is also rising. Right. Now, supposing my eyes rise and that slot doesn't rise, what will happen? Nothing. It'll just pop out. It will pop up. Yeah. Or you won't be able to wear the pen. Yeah. Okay. So everything has to expand simultaneously. Right. Simultaneously, not जब उसका mood करेगा तब आएगा. But if you cut off this, see, the nail is expanding. Okay, Yes. everything is happening. If you cut off the finger, will it expand? No. Because then it is away from the system. Yes. It is the system which is expanding. Okay, so similarly, as long as the nature part is there, the entire system is expanding. So everything in the system is expanding. It is not an isolation case. Correct. I have also given one more prediction that the eclipses, because they say that moon is moving away. Now a time will come when moon will move away so much. Out of the gravitational pull. Not out of the gravitational pull, but out of that it will be able to have an eclipse. Eclipse means the sun is shining on moon, and moon does not transmit the light to the earth, and therefore that shadow comes. See, that is eclipse. So they say that possibly over a period of time, maybe 100 million years or so and so, the eclipses will not happen. Wow. I am saying that this will happen for all time. Because it will expand simultaneously. Everything will expand, na? See, now for example, it is not only the space expanding, but Earth is also expanding, Moon is also expanding, Sun is also expanding. सब एक साथ हो रहा है. Sun, Earth is expanding, and all of them are expanding on the same nu constant. Wow. Therefore, the ratios will remain constant, and therefore eclipse is perpetual. Now, this is a big scientific thing which I am giving. They can verify it. एम्पिरिकल एविडेंस बचपन में मुझे बताया जाता था, अगर आप किसी चीज को कभी प्रूव करना चाहते हो, लिखित में ये प्रूव करके दिखाओ. और सर ने तो ये वर्बली लिखित सब कुछ कर दिया है. It's fascinating. I know that people want to spend so much more time with him. A new model of the universe, living organic universe, not dead, not something prehistoric. It's living, it's expanding, it's growing. Thank you so much, sir, for joining us, and just in awe of whatever you said. और मेरी तो बहुत एक्साइटमेंट होगी आपकी जो और किताबें भी आने वाली हैं. Wish you luck that all the naysayers or the contradictors all come into your joli. Thank you so much for joining us.
Thank you, Sahil. It's a Yeah. pleasure meeting you and talking to you. Thank you, sir.